are you? Happy, safe, healthy, corona free? Okay. Our today's topic is spherical refracting surfaces. In our today's class, we will learn about how refraction occurs at spherical surfaces. You know, we have two types of spherical surfaces. One is convex spherical surface. This is convex spherical surface, and this is concave spherical surface. You know, this is midpoint of the spherical surface known as pole. This is principal axis. This is center of curvature. This is denser medium with refractive index μ2, and this is rarer medium with refractive index μ1. In the same way, this is pole of the spherical refracting surface. This is, or you can say यहाँ पे, this is center of curvature of the spherical surface. This is again rarer medium. This is again denser medium. Here you see, this is convex spherical surface and this is concave. Why we are saying this spherical surface as concave spherical surface? Because its convex part is towards the rarer medium, or you can say its convex surface is facing the rarer medium. We are saying it concave spherical surface because its concave surface is facing the rarer medium. So we have two surfaces, two spherical refracting surfaces. First is convex, whose convex part is facing the rarer medium. Second is concave, whose concave part is facing the rarer medium. Now we have to study how refraction occurs through these two, or how refraction occurs at these two surfaces. Here we have to take some assumptions, and assumptions are यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो हम लेंगे वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा. सेकेंड अजम्पशन, जो हम डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे दैट वुड बी μ2, और रेयर मीडियम के लिए हमेशा ही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड बी μ1. सो सेकेंड इज, डेंसर के लिए आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट वुड बी μ2, एंड रेयर के लिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट वुड बी μ1. ये हमेशा फिक्स रहेगा आपका, रेयर के लिए μ1 एंड डेंसर के लिए μ2. थर्ड क्या होगा? थर्ड आपका असम्पशन ये होगा कि जो आपका साइन आई है दैट इज इक्विवेलेंट टू आई, और दैट इज इक्विवेलेंट टू टेंजेंट आई. यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इन द सेम वे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ आर इज कंपेरेबल टू आर और इज कंपेरेबल टू टेंजेंट ऑफ आर. जब आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही स्मॉल एंगल होंगे, इन दैट केस we can replace sin I by r, or we can replace I by tangent I. In the same way, we can replace sin of r to the r, or we can replace r by tangent r also. So these are the assumptions that we have to keep in mind while studying refraction through these spherical surfaces. Now we would discuss one by one. First is, let's say, convex spherical surface. So let us study refraction at convex spherical surface. So let us make the diagram. You know, this is refraction at convex spherical surfaces. Convex spherical surface आपको पता है, convex part would face the rarer medium, this is convex part, so this part will face the rarer medium, so this is
rarer medium with refractive index nu2. This is denser medium with refractive index nu2. This is midpoint of the spherical surface known as pole. Now, let us suppose I have placed an point object O at this place, or you can say I have placed a point object on this principal axis at position O. अब आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज अगर फॉर्म होगी तो इमेज फॉर्म होने के लिए दो रेज का मीट होना जरूरी है, इंटरसेक्ट करना जरूरी है। तो हम यहाँ से कहीं जो इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे उनको देखेंगे और आपकी इमेज या तो रियल इमेज होगी तो इस तरफ बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी तो इस तरफ बनेगी। सो दो रेज का मिनिमम 2 रेज का मीट होना जरूरी है। सो सपोज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट वन रे विल कम लाइक दिस एंड विल fall on this spherical refracting surfaces normally and it will pass straight. That means it would pass straight without any deviation. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी रे किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मली फॉल होती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाती है उस सरफेस से। तो एक रे ये चलेगी, दूसरी रे सेकेंड रे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट विल बी इंसिडेंट ऑन दिस surface. Let us give it a name x y. So x y spherical refracting surface पे second ray from the object will incident at this point, and you know whenever the ray will travel from rarer medium to denser medium, so it will bend towards the normal. So let us first draw the normal. So this is the normal, and the normal will intersect this principal axis at center of curvature. So this is center of curvature C. Now this ray, suppose this is its original path. Originally ये ऐसे इसको जाना चाहिए, but आपको पता है अगर ये नॉर्मल के ऊपर, जब आपको पता है ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, लेकिन यहाँ पे बेंड होने के दो चांसेस हैं। देखो मैं क्या करती हूँ, जहाँ पे भी ये इस सरफेस के ऊपर जहाँ पे भी ये आके फॉल हो रही है उस पॉइंट से, लेट से इसको एक नाम दे देते हैं ए। इस पॉइंट से होते हुए मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो रे है जो ओरिजिनली इसको ऐसे जाना चाहिए था, अगर यहाँ पे मैंने मीडियम डेंसर मीडियम अगर नहीं लिया होता तो ये स्ट्रेट ऐसे चली जाती। अब क्या है कि डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड करेगी, लेकिन इसका जो बेंड होने का डिग्री कितना होगा वो डिपेंड करेगा दो केसेस पे। या यहाँ पे दो केसेस हम स्टडी करेंगे। एक केस में हो सकता है ये इतनी बेंड करे, और अगर इतनी बेंड कर जाएगी तो आपको पता है ये कुछ ऐसे जाएगी, और अगर ऐसे जाएगी तो आपको पता है एक रे ये, दूसरी रे ये कहीं पे भी आगे फॉर्म नहीं होंगी। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो होगा हमारा वन केस। इस केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। लेकिन अगर दूसरे केस में हम ये मान लें कि जो इसकी डिग्री है बैंड होने की, इस ओरिजिनल रे की नॉर्मल की तरफ बैंड होने की डिग्री लेट से इतनी है, तो उस केस में क्या होगा, ये कुछ ऐसे बैंड हो जाएगी and it will cut the principal axis at a point, let's say इस पॉइंट पे कट करेगी। तो हमने क्या किया, जो रे ऐसे ओरिजिनली उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेट्स से वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई और कुछ ऐसे चलेगी। अब इसको सॉलिड लाइन से बना लेते हैं। ये आपकी रे आ गई, बाकी सबको रब कर देते हैं। ये सब आपको समझाने के लिए था। सो दिस इज द डायग्राम। सो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिस इज वन रे, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिस इज सेकेंड रे। बोथ द रेज विल मीट एट दिस पॉइंट एंड हियर at this point image of this point object will form. So let us give it a name I.
So at point I, image of the point object will be formed, because from this object here two rays are intersecting each other, meeting. So here image will be formed, and this image is real image. वर्चुअल इमेज, एज आई टोल्ड यू, जब आपकी जो रे है वो कम डिग्री पे बैंड होगी, उस केस में हम उसको पीछे की तरफ रिड्यूस करेंगे और वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी. तो आपको पता है ये जो इमेज बनी है ये रियल इमेज बनी है, एंड वी आर स्टडिंग रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फॉर रियल इमेज. रियल इमेज. And you know, this is incident ray, this is normal. So angle between incident ray and normal is known as angle of incidence. This is refracted ray, this is normal, this angle is known as angle of refraction R. Here the angle between principal axis and this incident ray is known as alpha. Angle between refracted ray and principal axis is known as beta, and the angle with this point center of curvature, जहाँ पे आपका normal and principal axis के बीच में जो angle है, that is known as gamma. Now simply what we do, we will apply Snell's law at point A, because here incident ray is going from rarer medium to the denser medium. So simply at point A, we will apply Snell's law. You all know Snell's law is mu2 by mu1 is equal to sine of I over sine of R. And I have told you when when angle of incidence or angle of reflection are small, in that case sin I और sin R को हम compare कर सकते हैं I by R. So in this case, that is cross multiply on both the sides. So it would be mu1 into I is equal to mu2 into R. So simply we have to find out the angle of incidence and angle of refraction. Angle of incidence, see, here this is angle of incidence, this is a triangle OAC. In this triangle, angle of incidence is external angle, and it is, you know, external angle is equal to the sum of internal angles of a triangle. So alpha and gamma are two internal angles of this triangle, and I is external angle. So from here we can write angle I is equal to alpha plus gamma. This is first, and in the same way we have to find out the angle of refraction. See here in this triangle, in triangle AIC, gamma is external triangle, and external triangle gamma is equal to the R plus beta. So in triangle, this was in triangle AOC. AOC triangle में हमने ये लिया था. In triangle AIC, gamma is equal to, या simply आप gamma लिख लीजिए, is equal to R plus beta. Now from here we have to find out the value of R. R is equal to gamma minus beta. So put these values of angle I and angle R in this equation. So it would become mu1 I in place of I, alpha plus gamma, and in place of mu2 R. R is gamma minus beta. Now alpha, beta or gamma, we will take in place of alpha, beta or gamma, we will take tangent of alpha, tangent of beta and tangent of gamma. So mu1, where is alpha? We have to do one more thing. We have to draw a perpendicular from A. This is pole. From A we have to draw a perpendicular on the principal axis, and let us give it a name M. So we have to, for alpha, let us consider this triangle OAM. In this triangle this is alpha, and if we find tangent alpha, so tangent alpha is PBP HHP, perpendicular over base, this is perpendicular and this is base. So we could write in place of alpha, we can replace alpha by tangent of alpha, and tangent of alpha is AM by OM. So AM by OM
In the same way, gamma is, we can take for gamma this triangle AMC. Gamma is perpendicular over base AM over MC. So AM over MC, and this is equal to mu2. Again gamma is again AM over MC minus beta. Beta के लिए हम ट्रायंगल लेंगे AMI. In triangle AMI, tangent of beta is equal to AM by MI. So AM by MI. Now we will do one thing, because M is very close to P, because this aperture is very small, and for that M is very close to P. Therefore जहाँ पे भी डिस्टेंस आपका OM है उसको हम कंपेयर कर देंगे OP से, MC को हम कंपेयर कर देंगे PC से. M is close to P, therefore MC is PC, and one more thing, MI would be comparable to PI. So replace all these values. We would get mu1 into AM. OM would be replaced by OP plus AM by MC. MC is comparable to PC, and this is equal to mu2 into AM by MC. MC again comparable to PC minus AM by MI. MI is comparable to PI. Now you know that OP, AM को आप दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विथ mu1 1 by OP plus 1 by PC is equal to mu2 1 by PC minus 1 over PI. Let's remove this. Now OP. What is OP? OP, you know the sign conventions. The distance from pole to object is known as, this distance is known as U. This distance is known as, pole to center of curvature is known as radius of curvature, and pole से image तक का जो distance है that is known as image distance, and we denote it by V. So OP is, आपको पता है, this is minus of U. OP again we need PC. PC is R, and PI is V. So replace all these. We will get mu1 into 1 by OP. OP is minus of U plus 1 by PC. So PC is R. So 1 by R, and this is equal to mu2 into 1 by PC. PC is again R plus minus 1 by PI. So 1 by PI is V. So it would be mu1 over minus of U plus mu1 into R is equal to mu2 over R minus of mu2 by V. Take R to that side and bring this to this side. So it would become mu1 by minus of U. अगर इसको आप इधर लेके आते हो तो it would be of plus mu2 by V, and this is equal to mu2 by R minus mu1 by R, and we can write it in this way, mu1 by minus of U plus mu2 by V is equal to 1 by R, or we can write mu2 minus mu1 by R. So this is the relation for refraction at convex spherical surfaces when the rays are traveling from rarer medium to denser medium, or we can say refraction at convex spherical surface for refraction going from rarer medium to denser medium. This is the relation. In the next video, we will do the refraction at convex spherical surface for the virtual image. Thank you.